आज मु खाई मु ताकू चिट्ठी लिखी आसी खाई जाऊँगी तेणु से पर्टिकुलर सिचुएशन रे आमे को टेंस यूज करबा कथा आमे को टेंस यूज करबा कथा आज ए वीडियो रे से जिनस पूरा पूरी क्लियर कर देबी कि आमे ए जो मु खाई देछि सेठी पळेछि सेठी जाइछि मु लिखि देछि से गुडी को को बळी भाबरे आमे कहबा आज ए पर्टिकुलर वीडियो रे पूरा पूरी क्लियर हो जिवो सो नो मोर कंफ्यूजन और डाउट्स आफ्टर दिस लेसन सो लेट्स स्टार्ट देखो आमर जिते बेले आमे गोटे घटना पास्ट रू आरंभ करिछे किंतु जस्ट एबे सरीछि राइट जे कोनोसी घटना पास्ट रे आमे आरंभ करिछे किंतु जस्ट एबे सरीछि ता पई आमे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करे ता पई आमे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूछु right what is the name of the tense it is called present perfect tense so what is the definition we use present perfect tense for the actions which happened in the past but has a connection in the present it has a link in the present so for that we use present perfect tense the most commonly used tense that is present perfect tense okay so now after understanding the definition देखो जेकोसी टेंस पे दीटा जिनस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द फर्स्ट वन इज द डेफिनेशन एंड सेकेंड वन इज द पैटर्न सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन लेट्स अंडरस्टैंड द पैटर्न एक्सक्यूज मी सी पैटर्न होची देखो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सपोज आई हैव eaten my food I have eaten my food right I have eaten my food एथरे कोन हला मु have लगेली और eaten कोन eaten होची आपनकर v3 eat ate eaten right eat ate eaten तनो v3 right एथरे कोन लागला हमरा have लागला right have verb जोटा कि हमरा auxiliary verb right देखो आ गुड एग्जांपल दोची जेमति कि he has written a letter right he has written a letter एटा written होची कोन v3 तापरे has लागिला ता माने आमे जेते बेले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूछु तार पैटर्न होची हमर have और has लागिबो तापरे v3 लागिबो v3 लागिबो v1 v2 v3 वर्ब माने हमर तीनटा फॉर्म थाए v1 v2 v3 फॉर एग्जांपल eat ate eaten write wrote written come came come put hurt hurt close closed closed open opened opened तेणु तारा हमर तीनटा फॉर्म थाए तेणु आमे सबु बेले v3 टा को ही यूज करबा जत्ते बेले आमे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टा यूज करूचे so let me write down the formula what is the formula for present perfect tense na pattern by right pattern ta हम जदी मन रखु जे ताले हम सेंटेंस गणिया रे कोनोसी भी प्रॉब्लम होबा नै देखो हमरा I we you our they plus have very important very plus v3 एटास गोल्डन रूल मन रखिबे जे हमर आई वी यू दे संगे सब बेले हैव लागबो तापरे v3 लागबो किंतु ही शी आउ इट रे हैज लागबो प्लस v3 लागबो राइट सेति लागि ही हैज रिटन अ लेटर राइट ही हैज रिटन अ लेटर एथरे कौन से भी भूल करेंगे जदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे आप डेफिनेशन बुझी गले तेबे आपण ए प्रोनाउन टा को केयरफुली बुझिबे एक्चुअली आई वी यू देरे के भी भूल हुएनी भूल हुए हमर ही शी इट रे हमें हैज बदल रे हैव लगी तो ही हैव रिटन अ लेटर जेमते कि सपोज रोहन गोटे पिला अछि रोहन हैव रिटन अ लेटर नो रोहन इज अ बॉय सो वी विल अप्लाई ही हैज रिटन अ लेटर
Sita has eaten her food. Sita have eaten her food? No. Sita mane jio. Ta mane she. It is falling into the category of she. So she has eaten her food. Right? Mr. Smith's family has watched that movie. Or Mr. Smith's family has seen that movie. Right? Has a verb. Now Mr. Smith's mane they. Ta mane eta have a verb. Mr. Smith's family have watched that movie. एथिरे केबे भी कंफ्यूजन आपण आनिबेनी हमर जनरली कंफ्यूजन एया ही हुए हम प्रोनाउन रे सटीक भाव रे हैव की हैज लगे पारुनी किंतु आपण जदि बुझी गले कि ही शी इट रे हमको हैज लगे बार अछि आ कोनोसी भी कंफ्यूजन होबो नै सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स सो दैट यू हैव द क्लैरिटी ओके सी देखो तो जेंति कि से आजी शॉपिंग मॉल को जाई छी से आजी शॉपिंग मॉल को जाई छी he has gone to the shopping mall right तर हमें नेगेटिव सेंटेंस केमती करिबा he hasn't gone to the shopping mall तर इंट्रोगेटिव केमती करिबा has he gone to the shopping mall right ए बोला हैला सिंपली लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल they have already called him the negative they haven't already called him have they already called him तेणु जेते बेले मु have की has लगुची हमर सब बेले तार हमर V3 ही लागिबो ओके आउट एग्जांपल we have made the reservation हमें reservation कर देजु made V3 हला जेते B हला हमें have लगेले राइट आउट एग्जांपल होची Ravi has spoken to his manager. Ravi has spoken to his manager. Speak, spoke, spoken. Right? Ravi जेतु हमें he रे आसुची एटा हला has. Right? Auxiliary verb. So ए सेशन परे आपनकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को नेकी कोनोसी भी डाउट आई एम श्योर नथिबो आपण फंडामेंटल्स क्लियर हो जाइथिबो आपण कांसेप्ट क्लियर हो जाइथिबो व्हिच इज सो इजी इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट सो आफ्टर दिस आई रियली वांट यू टू डू सम प्रैक्टिसेस लाइक fill in the blanks or translation or jumbled words put the words in order किछिटा sentences किछिटा practices exercises निजे करंतु आ देखंतु present perfect tense would become so easy for you to use and you should do it because this is the most commonly used tense अपन जेते की भी प्रैक्टिस करिवे सेते की अपन कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर को बढ़िबो because your knowledge is your power and your power is your confidence so English can be easily made if you know the things and when this language is familiar to you so with your effort everything is possible so let's start creating that environment and let's learn and speak English very soon with that keep learning English Jai Jagannath